and where this small fx was a periodic function, such that fx is equal to fx plus 2, and this for x lies between 0 and 1 and is equal to 2 minus x when x lies between 1 and 2. And we have seen that this capital F is actually a continuous function. So this F was continuous on this whole domain. And we have to see whether it is differentiable or not. So for that, we have chosen a fixed point x0 on R. We have taken this point x0, and then we have taken integer m be a fixed integer. Yes, you can take integer instead of this natural number, maybe some integer. Z. And so this is your another line, and this is your 4 to the power m and x0, 4 to the power m x0. So suppose it lies in this interval bounded by the integers k and k plus 1. K and k plus 1. Now you divide this k by 4 to the power minus m. So suppose you are here. So call this number as alpha m. So this alpha m is 4 to the power minus m into k, and this beta m is 4 to the power minus m k plus 1 into k plus 1. ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था. And we also saw this thing that this 4 to the power n, where n is a variable number, variable integer, m was fixed. So 4 to the power n beta m minus 4 to the power n alpha m, this is actually equal to, so when you subtract this 4 to the power n beta m, so you subtract by multiplying this 4 to the power n this quantity to this quantity. So you will get 4 to the power n minus n. 4 to the power n minus n. So, so if this n bigger than m, when n bigger than m, this must be an even integer. So this is an even integer. So this is an even number if n bigger than m. And when n is less than m, when n is less than m, when n is less than m, so it means this m is greater than n. So you can write 1 upon 4 to the power m minus n. 1 upon 4 to the power m minus n. And you can see there is no integer in between these two numbers. There is no integer in between these two numbers. So that's the point. And when n is equal to m, this is actually equal to 1. So when n is equal to m, this difference is equal to 1. ओके, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था, ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था, दिस f4 to the power n beta m minus f4 to the power n alpha m, और ये हमने कहा था कि इसकी वैल्यू होगी, दिस इज इक्वल टू 0 when n bigger than m. When n bigger than m, आप याद करिए जब n m से बड़ा है तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस एक इवन इंटीजर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन दैट इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इसकी वैल्यू जो x पे है, x पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही x+2 पे, वही x+4 पे, x+6 पे. तो जब भी दो नंबर्स का डिफरेंस एक इवन इंटीजर होगा
तो उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों जो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस एक इवन इंटीजर है व्हेन n बिगर देन m, एंड देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ देयर फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी 0, and when n less than equal to m, their difference is just 4 to the power n minus m. So actually their difference is 4 to the power n minus m. इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 4 to the power n minus m है, और चूंकि जब n m से छोटा है तो ये दोनों के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, और फंक्शन का बिहेवियर इस तरह से है, आपने देखा है 0 1 2, तो 0 1 के बीच में इसका फंक्शन जो है वो x है, और 1 2 के बीच में फंक्शन है आपका 2 minus x. So if you take any 2 point here, their difference is just the difference between the points, that is x, मान लीजिए अगर ये x1 पॉइंट लेते हैं, x2 पॉइंट लेते हैं, और इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, so this fx1 minus fx2 is x1 minus x2, and similarly here also this x1 minus x2, fx1 minus fx2 is equal to 2 minus x1 minus 2 minus x2, and therefore x1 minus x2. So therefore if there is no integer in between the two numbers, this fx1 minus fx2 is same as mod x1 minus x2, and x1 minus x2 is equal to 4 to the power n minus m, so therefore this difference is 4 to the power n minus m. Is it okay to everybody? कल हम लोग यहाँ पे ये डिफरेंस करें। Okay. So now I am interested to calculate this difference, this capital F beta m, capital F beta m minus small minus capital F alpha, क्योंकि आपको याद होगा कि हमको इस f को दिखाना है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल, इसको चेक करना है कि f किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमने एक x0 आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, और x0 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने दो सीक्वेंस इस तरह से तैयार किया, अल्फा m और बीटा m, जैसा कि आपने कल देखा था, हमने जो लेमा प्रूफ किया था। अगर अल्फा m और बीटा m इस तरह के दो सीक्वेंसेस हों कि अल्फा m एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बीटा m एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, and alpha m and beta m both converges to x0 when m tending to infinity. So this is the fact here. This alpha m converges to x0 and beta m also converges to x0. So then what? So then if you find the quotient f beta m minus f alpha m divided by beta m minus alpha m, and take the limit m tending to infinity, and if this limit exists, this is the derivative of the function at x0. तो ये हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका जो कोशेंट है दिस बीटा m माइनस अल्फा m व्हेन m टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, क्या ये एक फाइनाइट नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, एंड देन दिस लिमिट इज एक्चुअली इक्वल टू f dash x0. So let us calculate this numerator first. So forget about the denominator. So we'll see later on. So this is equal to, you just put the value of this from the definition of capital F. So you will get this sigma 3 upon 4 to the power n, and this is small f 4 to the power n beta m, and minus small f 4 to the power n alpha m. हमने ये टर्म दोनों में से कॉमन कर लिया है, and this is your n varies from 0 to infinity. Yeah. Is it okay? ठीक है ना, केवल हमने f बीटा m और fx जो कैपिटल fx का डेफिनेशन है वहां से हमने x के जगह पे बीटा m लिखा है, x के जगह पे अल्फा m लिखा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये रिलेशन हमको मिल गया। ओके, राइट। नाउ यू सी फॉर n greater than m,
m एक फिक्स्ड इंटीजर है, m कोई नंबर में भी 100 आप ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। उस 100 से बड़े, उस फिक्स नंबर से बड़े जितने भी n होंगे उनके लिए इनका डिफरेंस 0 है। 4 to the power n beta m minus 4 to the power n alpha m, this is equal to 0. So therefore this sum has only finitely many terms. So therefore you should write this n is equal to 0 to m and 3 upon 4. So maybe you take the modulus here. So modulus of f beta m minus f alpha m, this modulus, this is equal to this modulus of 3 upon 4 to the power m and this f4 to the power n beta m and minus f4 to the power n alpha m. Do you think this modulus is really required? क्या ये modulus यहाँ जरूरी है? Is it really required? You see, this beta m is always greater than alpha m. Beta m is always greater than alpha m. So beta m is greater than alpha m. I don't think this modulus is required here, because if you take modulus, then by triangular inequality this will be less than equal to, and you don't need less than equal to. You don't need less than equal to inequality here. So for the moment, let us forget about this modulus sign, and let us just erase this modulus. I will explain why I am writing this. So maybe you write this thing. And for n less than equal to m, this difference is equal to 4 to the power n minus m. Right? This difference is 4 to the power n minus m. And for n is equal to m, yeah? ऊपर जो आपने कैलकुलेट किया है f4 to power n बीटा m माइनस, उसको बिना मार्क में ही कैलकुलेट करके आई थिंक तब भी उतना ही आता है। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं क्यों ऐसा आएगा। फॉर द मोमेंट लेट्स अज्यूम दैट दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस m। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मॉडुलस की कोई जरूरत बेसिकली नहीं है, बिना मॉडुलस के ही आ जाएगा। तो मे बी यू जस्ट इरेज इट। This modulus is not needed actually. This modulus is not needed. लेकिन इसको भी जस्टिफाई करना होगा क्यों मॉडुलस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां जब x1 x2 जब फर्स्ट स्लॉट में है, जब उसकी वैल्यू x है, देन इट इज ओके, बट व्हाट हैपन इन सेकंड स्लॉट? So I will explain. So for the moment, let us assume that f4 to the power n beta m minus f4 to the power n alpha m without modulus this much, and then first finish the proof and then we'll here. So this is actually equal to, so this suppose this is equal to 3 upon 4 to the power m and 3 upon 4 to the power m and plus
plus this beta m minus alpha m n and 4 to the power n minus m. And here m varies from 0 to right. Alpha m, this is equal to 3 upon 4 to the power m and 3 upon 4 to the power m 4 to the power n minus m. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है नहीं सर, आप दिख रहे थे वो प्रोसीड। हाँ सर, आ गया हो गया। There is some internet issue. Actually, today I am working from home. I am not in the department. That is why the internet connectivity is not very good. So, yeah. So next I want to write this thing, that is modulus of f beta m this is greater than equal to this 3 upon 4 to the power m and minus this sum m minus 1 and this 3 upon 4 to the power n and 4 to the power n minus m. So what this is this? This is if you take the modulus here. इसके प्रीवियस लाइन को भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना, कैसे आया वो समझ में नहीं आया। कौन सा टर्म? इसके प्रीवियस लाइन को। आवाज मेरी आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ, इसमें कौन सा क्लियर हो रहा है? वो कैसे आया वो फिर से बोल दीजिए। ये यहाँ से ये डिफरेंस आपको कंफ्यूजन हो रहा है। स्मॉल f 4 to the power n beta m minus f 4 to the power n alpha m. यस सर। यानी किस स्टेप में कंफ्यूजन? स्लाइड में या थर्ड? सेकंड स्लाइड में? यहीं पर सर, वो जो लास्ट लाइन है ना उस पर। सर लास्ट के जो 2 लाइन्स हैं उनको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आवाज नहीं आप लोग की आ रही है क्या? हेलो सर, लास्ट लाइन सर, इसी स्लाइड में। थर्ड स्लाइड ये सर इसी में जो नीचे आप लिखे हैं ना सर, सेकंड स्लाइड में ही। मैं समझ नहीं रहा हूँ किसमें आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। सेकंड स्लाइड में या थर्ड स्लाइड में? पहले बताइए, थर्ड स्लाइड या सेकंड स्लाइड? सर सेकंड स्लाइड लास्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे। हाँ, सेकंड स्लाइड में ये देखिए, ये f बीटा m माइनस f अल्फा m दिस इक्वल टू, इस स्टेटमेंट ये तो क्लियर है।
ये तो केवल हमने इसमें कैपिटल एफ की वैल्यू हमने रख दिया है, कैपिटल एफ की वैल्यू स्मॉल एफ के टर्म में, यस राइट। स्मॉल एफ 4 to the power n बीटा m, ठीक है। अब इसमें n वेरीज फ्रॉम 0 to m है, क्योंकि m से बड़े सभी n के लिए ये डिफरेंस जो है वो 0 है। So therefore you have only first m plus 1 terms, first m plus 1 terms for n is equal to 0 and n is equal to 1 to n is equal to m. अब n is equal to m के लिए, n is equal to m के लिए इस डिफरेंस की वैल्यू 1 है, तो उसको हमने पहले कर लिया 3/4 to the power m। और जो बचे हुए m टर्म्स हैं फॉर n is equal to 0 to n is equal to m minus 1, उसको हमने अलग से लिखा n is equal to 0 to n is equal to m minus 1। और n is equal to 0 to m minus 1 के लिए when n strictly less than m, ये डिफरेंस है 4 to the power n minus m, तो ये हमने यहां से लिखा 4 to the power n minus m, 3/4 to the power n and 4 to the power n minus m। ठीक है। अब सर वहाँ 0 से इन्फिनिटी लिए हैं, फिर 0 से m लिए हैं, तो एक और बनेगा ना उसमें ऐड करके? नहीं, m से बड़े जितने n हैं उनके लिए डिफरेंस 0 है। जब n से बड़ा m आप ले रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस 0 है, ये 4 to, ठीक है ना। इसको 3 पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। एक तो लिखिए n इज इक्वल टू 0 टू m माइनस 1, फिर n इज इक्वल टू m, और फिर n ग्रेटर देन m। तो n ग्रेटर देन m के लिए डिफरेंस 0 है, n इज इक्वल टू m के लिए आपको ये टर्म मिल गया, और n वेरीज फ्रॉम 0 टू m माइनस 1 के लिए ये सम हो गया। ठीक है। यस सर। ओके ओके, now you have this inequality, you know, this mod a mod a plus b, you know, this is greater than equal to always this mod a and minus mod b. Is it correct? Mod a I think this should be minus. This a minus b greater than equal to mod a minus mod b. You see here, because you know from triangular inequality this mod a can be written as mod a plus mod a and plus b minus b you can write, or this is equal to mod a minus b plus b, and this can be written as less than equal to mod a minus b and plus mod b. So therefore this mod a minus b is greater than equal to mod a minus mod b. सर राइट साइड में जो है उसके ऊपर और एक मॉड नहीं लगेगा, होल मॉड? नहीं, ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, so this 3/4 to the power m is always a positive number, so if you write mod a is equal to a,
और यहाँ भी अगर मॉड आप लगाएंगे तो मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द सेम नंबर। तो हमने इस इनइक्वालिटी का यूज किया। हाँ, उसी में बता रही थी मैं, उस प्रॉपर्टी में बता रही थी। हाँ, इस प्रॉपर्टी में मॉड a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी। ठीक है, मैं बता रही थी कि उस प्रॉपर्टी में राइट साइड में और एक होल मॉड नहीं होगा। नहीं, फिलहाल तो हमें इसकी जरूरत है, मॉड a माइनस बी। यू सी हियर दिस मॉड a कैन बी रिटन एज मॉड a प्लस b माइनस b। ठीक है, and this can be written as, you just use triangular inequality to write mod a minus b plus mod b। और यहां से इसको आप लेफ्ट में लाइए और इसको राइट में लेके चले जाइए। तो mod a माइनस b, दिस ग्रेटर, नाउ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको अगर आप लेफ्ट में लेके चले गए तो mod a माइनस mod b। तो हम केवल इसका यूज कर रहे हैं, mod a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू mod a माइनस mod b। ठीक है, यस सर। यस सर। अब इसको अगर आप सम करें तो यू विल हैव, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, and sum is equal to 3 upon 4 to the power m and minus 4 to the power minus m को आप बाहर कर लीजिए। 4 to the power minus m को बाहर करिए तो क्या होगा, 1 upon 4 to the power m, और ये 4 to the power m 4 to the power n कैंसिल होगा, एंड बेसिकली 3 to the power n एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा जिसका पहला टर्म होगा 1। तो क्या होगा, इसके n टर्म्स का सम, तो r to the power n, so 3 to the power m and minus 1 upon r minus 1, that is 2। इज इट करेक्ट? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा जिसका कॉमन रेशियो होगा 3 और नंबर ऑफ टर्म्स हैं m। फर्स्ट टर्म है 1, so a into r to the power m minus 1 upon r minus 1, and finally this is equal to, तो इसमें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 upon 4 to the power m, 3 upon 4 to the power m हाफ के साथ है और यहाँ 3 upon 4 to the power m है, तो आपको मिलेगा 1 upon 2 times 3 upon 4 to the power m and plus 1 upon 2 times 1 upon 4 to the power m, right? Yes sir। Yeah, and your beta m minus alpha m, beta m minus alpha m, this is equal to, ये क्या है, 4 to the power minus m, beta m minus alpha m, this is equal to, हाँ, ये बीटा m और अल्फा m का डिफरेंस 4 to the power minus m k plus 1 minus 4 to the power minus m k, 4 to the power minus m k कैंसिल होगा, 4 to the power minus m बचेगा, 4 to the power minus m। You see here, as m tending to infinity, this beta m minus alpha m tending to 0. So as m tending to infinity, this difference tending to 0. Now let us divide by this quotient, divide by this term beta m minus alpha m to both the sides. So what will you get? Maybe let us erase this terms in the middle. Because you have to show the limit of the quotient. So what will happen if you consider this f beta m minus f alpha m divided by beta m minus alpha m,
and let us take this quotient. So this is equal to, when you divide by 4 to the power minus m, what will you get? 1 upon 2, 3 to the power m. So this is greater than 1 upon 2, 3 to the power m. And in fact, plus something, plus half is also there. So maybe we write plus half. Right? यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये बीटा एम माइनस अल्फा एम यहाँ इक्वेलिटी है इसलिए आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, जब आप डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड होगा एफ बीटा एम माइनस एफ अल्फा एम अपॉन बीटा एम माइनस अल्फा एम, और राइट साइड में है 1 अपॉन 2 3 4 टू द पावर m, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर माइनस m है, तो 4 to the power minus m, 4 to the power minus m, 4 to the minus m cancel, you will get 1 upon 2, 3 to the power m plus 1 upon 2. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जब m इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? अल्फा m बीटा m को अप्रोच करेगा, लेकिन अल्फा m x0 को अप्रोच कर रहा है, बीटा m x0 को अप्रोच कर रहा है. So finally both numbers alpha m beta m approaching to x0 and this difference approaching to 0. But what about here? क्या ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जब m इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये डिफरेंस इंफिनिटी से भी बड़ा है, therefore this limit does not exist. So as m tending to infinity, the limit f beta m minus f alpha m upon beta m minus alpha m, this limit does not exist, and therefore this f dash x0, this does not exist. और x0 आपने arbitrary point लिया है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज x0 is arbitrary. This f is not differentiable at any real number. F is not differentiable for any x0 belongs to R. So therefore this function f is not differentiable. So since x0 is arbitrary, this f is nowhere differentiable. Is it okay? यस सर। या अब एक चीज यहाँ पे हम पीछे जो हमें एक यहाँ पे हमने जो मॉड हटाया था, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं कि क्या यहाँ मॉडुलस की जरूरत है कि नहीं एक्चुअली। तो 4 to the power n beta m is bigger than 4 to the power n alpha m, right? 4 to the power n beta m is bigger than 4 to the power n alpha m, right? So मान लीजिए कि आपका ग्राफ इस तरह से है, and here is 0, here is 1, here is 2, and in between these two numbers, as n less than m, there is no integer in between. So then what? So suppose your x1 x2 are two numbers here and x2 bigger than x1, then fx2 minus fx1 will be x2 minus x1, and this 4 to the power n beta m minus 4 to the power n alpha m is okay, 4 to the power n minus m. But if your
Suppose x2 is here and x1 is here. Then fx2 minus fx1 will be minus, I think. It will be minus of 4 to the power n minus m. So you have to take the modulus. मॉडुलस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x2 होगा और 2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x2 के लिए तो दिस विल बी 2 माइनस x2 and minus 2 minus x1. So this will be x1 minus x2 instead of x2 minus x1. तो इसलिए यहाँ पे आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा. तो मे बी वी हैव टू करेक्ट इट. मॉडुलस रहेगा. अब ये अगर मॉडुलस रहेगा तो यहाँ पे हमें क्या करेक्शन करना होगा? विल जस्ट करेक्ट. तो अगर ये मॉडुलस आपको अल्फा एम और बीटा एम की एक बार वैल्यू रखिए, देखिए क्या वहाँ पे. नहीं, ये तो मॉडुलस रखना होगा. ये तो मॉडुलस रखना पड़ेगा और ये मॉडुलस रखते हैं तो फिर यहाँ भी मॉडुलस रखना होगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तक तो बिल्कुल डेफिनेशन हमने लिखा है. अगर अल्फा एम और बीटा एम की वैल्यू रखें, एक बार रखिए तो देखे नहीं कहाँ पे? एफ ऑफ 4m बीटा एम माइनस एफ ऑफ 4m अल्फा एम जहाँ है, बीटा एम और अल्फा दो सीक्वेंसेस हैं, उनकी एक अपनी वैल्यू है ना. नहीं वो वैल्यू रखने पे तो ये डिफरेंस आया ही है 4 to the power n minus m. ठीक है ना. यहाँ क्वेश्चन बस ये था कि जब n लेस देन m है, व्हेन n लेस देन m, तो क्वेश्चन ये था कि इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं है. इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं है. इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं है तो इन दोनों के बीच में कोई ठीक है. देखिए अरे हम कैलकुलेट तो डिफरेंस ही कर रहे हैं ना, तभी मैं कह रहा हूँ आएगा यही एक्चुअली में लिखा है आपने. आप देखिए हमको क्या चाहिए उस सीरीज में, हमको डिफरेंस ही चाहिए. नहीं एक चीज यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया है वो ये किया है. देखिए यहाँ देखिए ये आपने जो कैलकुलेट किया है 4 to the power n beta m minus 4 to the power n alpha n, this is equal to 4 to the power n minus m. बट क्वेश्चन ये है कि f of this minus f of this ये x1 minus x2 हो रहा है कि x2 minus x1 हो रहा है. ठीक है ना. ये डिफरेंस तो 4 to the power n minus m आएगा, निश्चित रूप से आएगा क्योंकि बीटा m बिगर देन अल्फा m है. कोई दिक्कत नहीं है. अब क्वेश्चन ये है कि f of 4 to the power n beta m minus f of 4 to the power n alpha m, whether this is equal to this minus this or this minus this. ठीक है. तो अब ये फिलहाल हम 100% नहीं कह सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट स्लॉट में है, क्योंकि हर इंटीजर के लिए आप देखिए 0 to 2 में अगर 0 to 1 अगर इंटरवल के अंदर है या 2 to 3 इंटरवल के अंदर है तब तो fx1 minus fx2 is equal to x2 minus x1 होगा. लेकिन अगर सेकेंड स्लॉट में है तो वो x1 minus x2 हो जाएगा. तो इसलिए हमको यहाँ मॉड लेना पड़ेगा. अब ये मॉड अगर लेना है तो फिर उसको कैसे आप यहाँ रिमूव करेंगे वो हमको सोचना है. तो मान लीजिए कि यहाँ भी आपने मॉड ले लिया. इस स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं है. इस स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है. इस स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द प्रॉब्लम इज हियर. When you put this value, you need this modular sign. You need this modular sign. इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखने के लिए आपको मॉडुलस साइन की जरूरत है. तो इसको मान लीजिए 2 स्टेप में आपने ब्रेक कर लिया. एक आपका है m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m के लिए और एक स्टेप हो गया n इज इक्वल टू 0 to m minus 1 के लिए. ठीक है. और अगर यहाँ मॉड आप लगाते हैं तो क्या होगा? मॉड ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मॉड ऑफ this whole thing, mod of this whole thing, and
mod of this whole thing, and I think mod of a plus b is also greater than mod of a minus mod of b. Is it correct? Mod of a plus b is also greater than equal to mod of a minus mod of b. Mod of a plus b, ये सही है कि नहीं? मिस्टेक किस लेवल पे हो रहा है? Modulus of this whole thing is equal to modulus of this whole thing, and क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए greater than equal to, तो modulus of a, मुझे लग रहा है जो लिखे थे सही लिखे थे, अभी जो लिखा था वो सही लिखा था। अभी लिखा था मतलब वो क्वांटिटी इनक्वालिटी जो लिखा है ये सही लिखा है, इनक्वालिटी सही लिखा है। Maybe I'll write here. So this modulus of, just for clarification I'm writing here, so modulus of 3 upon 4 to the power m and plus this sigma n is equal to 0 to m minus 1, and let us write 3 upon 4 to the power n and 4 to the power n minus m, and we need this is greater than equal to 3 upon 4 to the power m and minus this whole sum, n is equal to 0 to m minus 1, 3 upon 4 to the power n and 4 to the power n minus m. इनफैक्ट यहाँ पे तो जो है अभी ये आपने लिखा भी नहीं है, ये तो अभी तो ये केवल अभी f ही रहेगा। पीछे वाली स्लाइड पे चलिए, थोड़ा सा 3 upon 4 to the power n, and ये f समथिंग मान लीजिए आपका है, f4 to the power n बीटा m minus f4 to the power n alpha m, right? तो इसको mod a plus b can you write in this way is greater than equal to mod of a and minus mod of b. Mod of a minus mod of b. Mod of a minus mod of b. mod of a plus b greater or equal to mod of a minus b. ये सही है? हाँ ये सही है सर, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ ना। सुनिए, mod of a plus b greater or equal to mod of a minus b, और उसके बाद में तो अभी आपने प्रूफ ही किया। नहीं, अगर ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। mod of a माइनस, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन सही है तब तो आप ये mod a प्लस ये जो भी एक्सप्रेशन है, यू कैन राइट दिस mod of a माइनस this whole thing. So let us write, let us assume this is actually correct. This is actually correct because mod of a is always less than equal to mod of a plus b and plus mod of b. ठीक है, तो अगर ये इस एक्सप्रेशन को हम सही लें
तो आपका जो एक्सप्रेशन है 3/4 to the power m and plus this sigma 3/4 to the power n and f4 to the power n beta m and minus f4 to the power n alpha m. So modulus of this n is equal to 0 to m minus 1. This will be greater than equal to 3/4 to the power m and minus modulus of this whole thing, minus modulus of this whole thing, ये पूरा एक्सप्रेशन का मॉडुलस. और आप फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ यूज करिए, बिकॉज मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. So therefore minus mod a plus b will be greater than equal to minus mod a minus mod b. So therefore this is greater than equal to again 3/4 to the power m, और अब ये mod अंदर शिफ्ट हो जाएगा. So this will be your sigma 3/4 to the power n, और ये mod यहाँ नहीं रहेगा. Modulus of now this f4 to the power n beta m minus f4 to the power n alpha m, right? And now you can write the value of this thing, that is 3/4 to the power m and minus 3/4 to the power n, and this is your this difference is 4 to the power n minus n, and now everything is correct. तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा 3/4 to the power n 4 to the power n minus n. And this n varies from 0 to m minus 1. Now it is correct. I think now it is correct. Yeah. Yeah. So अशोक, वैसे भी प्रूफ हो जा रहा था. हाँ, ये भी आपने सही किया है, ये और वैसे भी कर वो इनइक्वालिटी सही है. हाँ वो इनइक्वालिटी सही है. यस यस. नहीं, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज किया, क्योंकि माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस, इसका यूज करना पड़ेगा, तब आप इस मॉडुलस को आप समेशन के अंदर आप लेके जा पाएंगे, और ये मॉडुलस समेशन के अंदर जब लाएंगे तब इसकी वैल्यू होगी 4 to the power n minus n. आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट. So yeah, now maybe I think here is some mistake. Maybe you just you can put here modulus sign. यहाँ तक तो सही है, लेकिन इस स्टेप के बाद जब आप लिखेंगे, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है, इस बीच में एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा. इस बीच में आप मॉडुलस इसका लगाइए, मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी is equal to modulus of this whole right hand side, modulus of this whole right hand side, and modulus of right hand side is greater than equal to the term corresponding to n is equal to m and minus modulus of the term corresponding to n is equal to 0 to m minus 1. और फिर आप वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी माइनस साइन के लिए यूज करके, और यहाँ पे सॉरी माइनस साइन आ जाएगा, सॉरी दिस इज माइनस साइन, दिस इज माइनस, and then everything is correct. Yeah. इनइक्वालिटी भी लगे. I think now it is correct. हमें लगता है कि कहीं स्टूडेंट्स को, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, निश्चित रूप से कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए should I rewrite again or is it okay? अशोक के अलावा और बाकी लोगों को आप लोग बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं? कंफ्यूजन हो गया है. ठीक है सर. कंफ्यूजन हो गया है. एनीवे, तो अब जो स्लाइड्स लिखा हुआ है मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा. तो मे बी आई जस्ट अगेन री एक्सप्लेन इट. सो या मे बी विद इन 2 or 3 minutes आई विल एक्सप्लेन. आप लोगों का समय हो गया है, बस 2 या 3 मिनट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो सबसे पहले हमें ये दिखाना था कि ये जो फंक्शन f है ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे. हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x0 लिया, और उस x0 पॉइंट में हमने एक 4 to the power m कोई एक हमने इंटीजर चूज किया, और 4 to the power m x0 एक हमने कोई
भी एक नंबर डेफिनेटली मिलेगा जो जिसके पहले और जिसके बाद के इंटीजर्स को हमने k plus 1 किया. So suppose this 4 to the power mx0 lies between this interval k to k plus 1. In fact, closed interval हो सकता है कि k ही हो जाए या k plus 1 हो जाए. So it lies in the closed interval k plus 1. अब इनके 4 to the power minus m से मल्टीप्लिकेशन पे जो नंबर होगा इसको हम एक सीक्वेंस का नाम दे दे रहे हैं अल्फा m और बीटा m. So alpha m is 4 to the power minus m k and beta m is 4 to the power minus m k plus 1. अब ये सीक्वेंस से जैसे m इंफिनिटी को टेंड करेगा ये x0 को अप्रोच करेंगे. तो जो जैसा कि हमको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरत थी दो सीक्वेंसेस की, दोनों सीक्वेंसेस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो दूसरा डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, और फिर हम m f बीटा m माइनस f अल्फा m अपॉन बीटा m माइनस अल्फा m का लिमिट लेते थे m टेंडिंग टू इंफिनिटी पे. अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम कह देते हैं कि फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल है. अब हमने ये देखा कि ये जो दो नंबर्स 4 टू द पावर माइनस एम के 4 टू द पावर माइनस एम के प्लस 1 है, इनके लिए आपने अल्फा एम बीटा एम नाम लिया है, इसको हमने 4 टू द पावर एन बीटा एम और 4 टू द पावर एन अल्फा एम इनका डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया. ये डिफरेंस हमने देखा अगर n m से बड़ा है तो एक इवन इंटीजर मिल रहा है, और अगर n m से छोटा है तो इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं हो रहा है. कोई इंटीजर नहीं होने का ये फायदा हमको मिलेगा कि उनके बीच की जो फंक्शनल वैल्यू है उनका डिफरेंस या तो x2 माइनस x1 होगा या x1 माइनस x2. यानी अगर मॉड आप ले लेते हैं दैट इज एग्जैक्टली 4 टू द पावर n माइनस m. और अगर n m से बड़ा है तो यहाँ पे फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 इट्स वैल्यू 0. तो अब इसको हम यहाँ पे ये डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया f बीटा m माइनस f अल्फा m का, और ये एग्जैक्टली यहाँ पे केवल फंक्शन की वैल्यू हमने रख दिया n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. चूंकि n m से जब बड़ा है तो जितने टर्म्स n m से बड़े के लिए होंगे वो सभी टर्म 0 हो जाएंगे. सो विल गेट ओनली फाइनाइटली मेनी टर्म्स, दैट इज m प्लस 1 टर्म for n is equal to 0 to n is equal to m. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी हम स्टडी करना चाहते हैं. मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बीटा एम माइनस अल्फा एम हमको चाहिए. मॉडुलस ऑफ एफ बीटा एम माइनस एफ अल्फा एम स्टडी कर रहे हैं. तो इसमें हमको दो टर्म में इस राइट हैंड साइड को ब्रेक कर ले रहे हैं. पहला टर्म जो mth टर्म है n इज इक्वल टू m के करेस्पॉन्डिंग, जो कि होगा 3/4 टू द पावर m, और बाकी जो m माइनस 1 टर्म से उनको हम सेपरेट कर दे रहे हैं. तो मॉडुलस ऑफ दिस m प्लस 1 टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस mth टर्म एंड माइनस मॉडुलस ऑफ m टर्म्स. बट यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी you can write the modulus inside this summation, and that is why you can write this 3/4 to the power m minus n is equal to 0 to m minus 1, and this is the value of the difference of the function. And now this is simple sum of geometric progression, and finally you see that this quotient is equal to, is in fact greater than this 3 to the power m and plus some constant. As m tending to infinity, this term itself tending to infinity, and this quotient is greater than that infinity, therefore this limit does not exist. So for arbitrary point x0, this limit does not exist, means this function is not differentiable at arbitrary point, and therefore f is not differentiable. Is it okay to everybody? Yes sir. Yes sir. Yes. Yeah. हाँ, अगर फिर भी नहीं क्लियर होगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट हमें लगता है काफी चीजें क्लियर हो गई. आप लोग फिर से इसको एक बार पढ़िएगा और क्वेश्चन की किताब को अगर आप लोग देखिएगा तो हमें लगता है काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो नेक्स्ट टर्न पे शायद कल हम क्लास नहीं लेंगे. हम वैसे आज भी छुट्टी पे हैं, लेकिन हमने सोचा कि चूंकि कल कुछ छूट गया था, आज हम उसको कंप्लीट कर लें. तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में. तो हम सेवरल वेरिएबल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग स्टडी करेंगे. Functions of several, differentiability of function of several variable. So thank you all. Sir, mid-sem exam Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. mid-sem exam जो है